Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to FinTech classes. So in today's class, I am going to initiate a very important subject of your plus 2 first year commerce stream, that is business studies and management. बाकी प्लस टू फर्स्ट ईयर कॉमर्स रे जो हमारा कॉमर्स रो टॉपिक्स रोची जो सब्जेक्ट्स रोची से भीतर टॉपिक्स गुडा होची अकाउंटिंग बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एदर तो तमे माने सिलेक्ट करि पारिबो सेल्समैनशिप या तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टॉपिक या तो आईटी या तो एंटरप्रेन्योरशिप ओके सो आज हमें गोटे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने को जाऊँ दैट इज बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट बाकी बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट ना ही जना पड़ुची ए सब्जेक्ट रे आमे जानिबा को पाइबा बिजनेस कोन बिजनेस रो टाइप्स कोन रही व्हाट वी नीड टू डू बिजनेस करले तार कोन सब एडवांटेजेस रही कोन सब रिस्क एलिमेंट रही बिजनेस रे बिजनेस रो ऑब्जेक्टिव कोन बिजनेस रो टाइप्स कोन एक्सेट्रा मींस after learning this subject we will get basic idea about business types of business or forms of business okay then हमें इस subject थ्रू हमें बुझीबा business कोन and business को manage केमिति करा जाए okay बाकी जो plus 2 first year syllabus रही छी to be very frank एथरे तमे ओनली जानिबा को पाइबो बिजनेस कोन बिजनेस रो तरीका केते प्रकार अछि बिजनेस रो टाइप्स केते प्रकार अछि बाकी मैनेजमेंट जो रहउची you will come to learn about the management topic in your second year means देखिबा को गले फर्स्ट ईयर we will study about business only okay तो आज रो क्लास रे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करिबा फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रो दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो थरे कि हमें बहुत किछि इंपोर्टेंट टर्म्स जानिबा को पाइबा ठीक अछि रिगार्डिंग द बिजनेस सो स्टार्ट करिबा आज रो क्लास सो सी यू तो बिजनेस कोन जानिबा पूर्व प्रथम हमको जानिबा को पड़िबो बिजनेस रो क्रिएशन कोठु हेछि फ्रॉम वेयर ये क्रिएट कोठु हेछि तो सब किछि रो स्टार्टिंग हेछि एक्टिविटी रू एक्टिविटी मींस ह्यूमन एक्टिविटी मींस ह्यूमन एक्टिविटी नाउ ह्यूमन एक्टिविटी माने कोन ह्यूमन एक्टिविटी मींस नथिंग इट इज वेरी सिंपल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स to satisfy their wants to satisfy their needs is regarded as human activity means मनीष निजर इच्छार परिपूर्णता पाई जेउ सब कार्य करे ताको हमें कहिबा activity the activity performed by human beings to satisfy their wants is regarded as human activity okay thereafter ये जो human activity रहिला आर पुनी केतेटा टाइप्स अछि कि इज देयर एनी सब कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी आंसर होची yes human activities are further divided into two parts that is economic activity and non economic activity that is economic activity and non economic activity now question is what is economic activity and what is non economic activity so economic activity means very simple the activities performed with the aim of earning money or with the aim of earning living is regarded as economic activity means economic activity refers to those human activities which are performed by human beings with the intention to earn money or with the intention to earn living माने मनीष निजर जो सब काम को करि थाए ना टंका आसरे किछि अर्निंग पाइबा आसरे तो ताको हमें कहिबा इकोनॉमिक एक्टिविटी Now, non-economic activity means those economic activities performed by human beings to get psychological satisfaction, to get mental satisfaction is regarded as non-economic activity or you can also say that non-economic activity means non-economic activity means those activities which are performed by human beings without any intention to earn money. These are the activities which are generally performed by human beings to get mental satisfaction, to get psychological satisfaction. अच्छा गोटे एग्जांपल थ्रू हमें दीटा जिंस को एनालिसिस करबा सपोज तुम होटल गलो खाइबा पई यू ऑर्डर सम फूड ओके तुमको होटल रो जो वेटर जे भी थिबे तुमको खाइबा आनी की देले ठीक अछि बुझो देन आफ्टर घर को गलो भोको अछि मां को गलो मां मते खाइबा को दियो मां भी तुमको खाइबा को देले बट ए भीतर तुम डिफरेंशिएट करबा को पड़िबो कोटा इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कोटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होटल वाला जो तुमको खाइबा को देले नो डाउट तुमको से माने खाइबा को दोजंदी बट with an intention to earn money तमठु से टंका कलेक्ट करिवे बट घरे जो तुमको मां खाइबा को दोजंती her intention is never to collect money her intention is to never to get
मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम यू से कहीं तुमको खाइबा को दोछन टू गेट सैटिस्फैक्शन तमे खाइले ताको खुशी लागिबो ओके सो एठी हमें देखिले फर्स्ट एग्जांपल थिला इकोनॉमिक एक्टिविटी रो जोटा कि होटल रे खाइबा आ गोटे थिला घरे मां जो खाइबा को दोछन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गोटे एग्जांपल लेवा चलो धरि नियो साइक्लोन आसिला बात्या हला ठीक अछि तमे किछि गरीब लोकन को खाइबा को दोछ किंबा जो माने प्रॉब्लम रे अछंती तमे ताको हेल्प करूछ बाकी विदाउट एनी इंटेंशन टू अर्न मनी तमर हेल्प करिवार इंटेंशन अछि सेमान को हेल्प करले यू आर गेटिंग मेंटल सैटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन तो आमे कहि परिबा दैट इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इकोनॉमिक एक्टिविटी माने कोन इकोनॉमिक एक्टिविटी माने होची सेही सब काम जोटा कि मनीष करे बट with an intention to earn money with an intention to earn living चला तमे बिजनेस करिलो तमे कोनसी प्रोफेशन करूछ तमे को जगह रे जे कि जॉब करूछ ए सब एग्जांपल होची इकोनॉमिक एक्टिविटी रो ओके सो आउटरे टिके क्लियर हि जिवा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होई छि सबुरा ना ह्यूमन एक्टिविटी मींस दोस एक्टिविटी व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सैटिस्फाई देयर वांट्स मनीष निजर इच्छार सैटिस्फैक्शन पाई निजर इच्छार परिपूर्णता पाई जे सब काम करे ना ताको हमें कहिबा ह्यूमन एक्टिविटी again human activity are further divided into two parts that is economic activity and non economic activity and non economic activity economic activity means what the activity is performed by human being with the aim of earning money or aim of earning living माने मनीष जे सब काम करे कोनोसी प्रकार टंका उपार्जन करिबा पई किबा निजर जीविका निर्वाह करिबा पई तो ताको हमें कहिबा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलो तमे कोठी बिजनेस करलो किबा कोनोसी प्रोफेशन करूछ किबा कोठी जे कि जॉब करूछ बट तम इंटेंशन होची मनी अर्न करबो टंका बिना चलिबो केमिति यस नो बाकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस दोस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस दोस एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स to get mental satisfaction to get psychological satisfaction ई प्रकार एक्टिविटी ना मनुष्य केबे भी टंका आसरे करेनी केबे भी monetary intention ने की करंतिनी जनरली दिस एक्टिविटीज आर डन बाय ह्यूमन बीइंग्स टू गेट मेंटल और साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन तमे सेही प्रकार काम काहे की करबो बिकॉज़ ऑफ लव अफेक्शन सिंपैथी ए सब जिंस पे तमे जदी चलो धरि नियो बहुत जोर से वर्षा होची ओके तमे देखिलो रोड रे गोटे छोट पपी अछि कुकुर छुआ अछि तमे कोन करलो ताको प्रोटेक्ट करलो तो तमे एठी गोटे एक्टिविटी करलो तमे गोटे कुकुर छुआ को पैसा मागि बारे मते प्रोटेक्ट कली गिव मी मनी आंसर होची नो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल तमे सेंती काहे की करलो बिकॉज़ तमरा सिंपैथी आसीला से डॉग प्रति दैट्स व्हाई यू प्रोटेक्ट द डॉग सो दिस इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके किबा तमे चलो गोटे भोकिला को खाइबा को देलो विदाउट एनी इंटेंशन टू अर्न मनी तो सेटा मध्ये गोटे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट तमे होटल करिछो लोगों को टिफिन दोचो with an intention to earn money that is an example of economic activity so economic activity means those activities which are performed by human being with an intention to earn money vice versa means those activities which are performed by human beings without any intention to earn money is regarded as non economic activity okay now we have to further study that economic activity रा पुडी किछि कैटेगरीज अछि कि is there any variety of economic activities ओके सेमिति नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रा फर्दर किछि पार्ट अछि कि जदि अछि कोन तो यस इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स दैट इज बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये तो पूरा महान तारा किछि फर्दर पार्टीशन नाही ओके तो टिके हम डायग्रामेटिक एनालिसिस करिबा प्रथमे अछि ह्यूमन एक्टिविटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स economic and non economic activity again economic activity is further divided into three parts that is business profession and employment तो business रो creation कोट होई छी business रो creation होई छी economic activity रो and economic activity रो creation होई छी human activity रो ओके तो आमे एठू क्लियर हे गले ना business आसी छी कोठू नाउ आमे एनालिसिस करिबा बिजनेस रो डेफिनेशन कोन बिजनेस रो माने कोन प्रोफेशन रो माने कोन एम्प्लॉयमेंट रो माने कोन ओके देन आमे डीपली पढिबा बिजनेस रो फीचर्स कोन रही छी बिजनेस रो ऑब्जेक्टिव कोन रही छी बिजनेस रो एडवांटेज कोन रही छी बिजनेस रो डिसएडवांटेज कोन रही छी बिजनेस रो टाइप्स कोन रही छी ओके तो स्टार्ट करिबा बिजनेस रो डेफिनेशन रो सो बिजनेस होची बिजनेस इट कम्स फ्रॉम बिजीनेस ओके बिजीनेस ओके बिजनेस माने होची कोन बिजनेस मींस all those activities like it includes production procurement purchase sale of goods and services
with the aim of earning profit माने जेते बेले जणे कोनोसी टंका लाभ आसारे कोनोसी सामान हो किंबा कोनोसी सेवार एक्सचेंज करंती ना ताको हमें कहबा बिजनेस बिजनेस इंक्लूड्स प्रोडक्शन निजे सामान तयारी करके भी तमे बिक्री करि परिबो प्रोक्यूरमेंट मींस तमे कोनोसी थर्ड पार्टी रे सामान आनि कि मध्ये तमे अन्य को सेल आउट करि परिबो मींस बिजनेस इंक्लूड्स प्रोडक्शन procurement purchase and sales of goods and services with an intention to get profit means लाभ आसरे जेते बेले मनिसो कोनोसी सामान किबा कोनोसी सर्विस रा एक्सचेंज करे ना ताको हमें कहि परिबा he or she is doing business okay thereafter profession means what profession refers to those economic activity which require special skill special knowledge means गोटे लोक सेते बेले प्रोफेशनल हबो जेते बेले ता पाखरे किछि स्पेसिफाइड स्किल थिबो स्पेसिफाइड नॉलेज थिबो then only we can regard that person as a professional okay example धरि लियो गोटे डॉक्टर if you wanted to be a doctor then you have to qualify the exam conducted by the medical department means MBBS exam तुमको क्रैक करिबा को पड़िबो suppose if you wanted to be a chartered accountant then you have to qualify the exam conducted by ICAI that is Institute of Chartered Accountant of India if you wanted to be a cost accountant then you have to qualify the exam conducted by ICMAI that is Institute of Cost and Management Accountant of India if you wanted to be a CS in your future means company secretary then you have to qualify the exam conducted by ICSI that is Institute of Company Secretary of India ओके तो एमिति बहुत सारा प्रोफेशन अछि तमे जदि प्रोफेशनल हेबा को चाहू ना देन यू हैव टू क्वालिफाई सर्टेन एग्जाम कंडक्टेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज ओके तुमको गोटे स्पेशल स्किल दरकार स्पेशल नॉलेज दरकार ठीक अछि देन ओनली यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल रे एग्जांपल जदि नेबा डॉक्टर लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरीज बहुत सारा प्रोफेशन अछि ओके नेक्स्ट आसुची एम्प्लॉयमेंट मींस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई जोठी की कोन करे गोटे लोक अन्य जनक पाखरे काम करे निजर सर्विसेज दिए विथ एन इंटेंशन टू गेट रेम्यूनरेशन और सैलरी फ्रॉम दैट पर्सन means in case of employment there is a relationship between two parties that is employer and employee होची सेही लोक जे एम्प्लॉयर पाई काम करे और एम्प्लॉयर होची सेही लोक जहा पाई की एम्प्लॉई काम करे so in case of employment there is a relationship between two person that is employer and employee is working for the employer with an intention to get remuneration or salary okay so this is all about the meaning of business profession and employment now we will study about the features business रे कोन सब फीचर रहिछि प्रोफेशन रे कोन सब फीचर्स रहिछि एंड एम्प्लॉयमेंट रे कोन सब फीचर्स रहिछि वन आफ्टर अनदर ओके फर्स्ट is business first of all it is an economic activity yes or no business is an economic activity okay because economic activity ro part is the business okay thereafter it deals with both production या तो procurement प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या तो बिजनेस रे कोन हो तमे निजे सामान तयारी करके पब्लिक को सेल करि परिबो या तो बाहर गोटे थर्ड पार्टी रु ना तमे सामान प्रोक्यूर करके ताको सेल करि परिबो एग्जांपल सपोज तुमको कैडबरी चॉकलेट खाइबार अछि इफ यू वांट टू ईट अ चॉकलेट तमे जो ग्रोसरी स्टोर को जाउ छ से ग्रोसरी स्टोर वाला कोन निजे मैन्युफैक्चर करू छी कैडबरी चॉकलेट आंसर होची नो से प्रोक्यूर करला यस और नो बाकी चलो तुमको इच्छा आला इफ यू वांट टू ईट पानी पूरी तो से पानी पूरी वाला निजे हाथ रे बने की तुमको दोजी मींस से प्रोडक्शन करला तो प्रोडक्शन मींस निजे सामान तयारी करके मार्केट रे सेल आउट करिबा प्रोक्यूरमेंट मींस गोटे थर्ड पार्टी रु सामान आने की मार्केट रे सेल आउट करिबा तो बिजनेस इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to satisfy the needs of human beings okay thereafter business should be regular in nature business ना में सेते बेले कहबा गोटे जिंस गोटे लोक बिजनेस करूची जेते बेले से ताको रेगुलरली करबो एमिति नै जे आज गोटे सामान एक्सचेंज करदेली तापर स्टॉप कर देली आ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करूनी दैट मींस मु कहि परिबिनी जे आई एम डूइंग बिजनेस फॉर एग्जांपल तमर गोटे ओल्ड फोन थिला तमरा बहुत पुराना हे गेलानी फोन तमे गोटे नुवा सेल फोन किनिलो तो तमे कोन कलो निजर ओल्ड फोन को सेल आउट करलो तो मु कहिबेनी जे तमे बिजनेस करूछो बिकॉज़ यू आर नॉट सेलिंग आउट योर फोन ऑन रेगुलर बेसिस हठात गोटे हे गला इंसिडेंट ओके बाकी बिजनेस कहा को कहबा जते बेले तमे रेगुलरली डील करथुबो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सहित देन ओनली हमें कहि परिबा यू आर डूइंग बिजनेस मींस बिजनेस हमें ताको कहबा जोटा कि रेगुलरली होथुबो इरेगुलर जिंस को हमें बिजनेस कहि परिबा
Okay, thereafter profit. Business ro main aim hochi earn profit. So profit earning is the main aim of every business. So profit hochi another important feature of business. Okay, next hochi, next is uncertainty. Business करूछ means किछि certainty of return न थाए. होई पारे आज तमरो huge profit, होई पारे you are the king today, होई पारे काली सकाळे तमे भिखारी भी जाई पारे, loss भी ही पारे. Possibilities are there. Business means obviously there is an uncertainty of return. Return रो किछि guarantee न थाए. होई पारे आज तमरो huge earning ही पारे, होई पारे तमरो huge loss भी ही पारे. So uncertainty is there and uncertainty is one of the important feature of business. Feature माने होछि गुण. गुण रे भलो गुण भी थाए, खराब गुण भी थाए. बाकी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होची बिजनेस रो गोटे डिसएडवांटेज, बिकॉज़ एतरे सर्टेनिटी रो किछि गारंटी न थाए. तमे कहि परिबोनी जे मोर सब बेले एई रेट रे अर्निंग हबो. ओके, देयर आफ्टर जदि अनसर्टेनिटी अछि, रिटर्न रो किछि गारंटी नै, मींस रिस्क इज देयर. सो अनदर इंपोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज रिस्क. Risk is an integral part of business. Risk is closely associated with business. Business अच्छी तो risk अच्छी. बिना risk रे कौन सी business possible नुहा. Okay. So this is all about the features of business. That business is an economic activity. It deals with production and procurement of goods and services. It deals with exchange of goods and services. It is regular in nature. It aims at profit. The result of business is uncertain. कौन सी certainty न था business रे. Thereafter, risk is closely associated with business, etc. So this is all about the features of business. Thereafter, profession. Profession माने कौन? It is a specialized skill of knowledge. It is a specialized skill one have to obtain by giving a special examination conducted by the professional body. Okay. Thereafter, profession रे कौन था ना गोटे code of conduct था. कौन था? Code of conduct is there. You cannot work beyond the code of conduct. Code of conduct माने तमको जब तमे गोटे प्रोफेशनल ना तमको गोटे क्राइटेरिया रे रही कि काम करिबा को पड़िबो. You have to obey the rules and regulation prescribed by the professional bodies. If you become a professional, you will also get a membership. Then membership is another feature of profession. यदि तमे professional, then you definitely get a membership from that professional body. Okay. Thereafter professional मानन को रिटर्न रे कोन मिलिबे? प्रोफेशनल मानन को रिटर्न रे मिलिबो फी. फॉर एग्जांपल डॉक्टर जेते बेले तमरो ट्रीटमेंट करिवे से तुमको फी मांगिबे ना, तुमको कहछंती वेजेस दियो, मते सैलरी दियो. नो, ही विल आस्क यू फॉर द फी. गिव मी माय फी. ओके. अच्छा, सेमिति बिजनेस केस रे बिजनेस में रिटर्न कोन थाय ना? प्रॉफिट. सेमिति प्रोफेशन केस रे रिटर्न कोन थाय? फी. जदि तमे एम्प्लॉयमेंट करूछ, यू आर एन एम्प्लॉय, तम पई रिटर्न तमरो रेम्युनरेशन बा सैलरी. Then also employment रे कौन सब feature था ना? There is a relationship between two person, employer and employee. एक. Number 2, employee को generally कौन सी capital invest करिबा को पड़ेनी. Capital माने कौन ना? Capital means that amount which is invested by the owner of the business. बाकी employee तो owner नुहा business रे, से business पाई कामो करूची, he is just working for the business. तो employee को एठी capital invest करिबा को पड़िबनी. बाकी employee is risk free. ताको कौन से risk नेबा दरकार नै. business चालू न चालू तार किछि फरक पड़िबन, ताको salary मिलिबो. Means ताको एते टेंशन नेबा दरकार नै. risk is not there in case of employee. Okay, जति कि businessman पाखरे risk था, employee पाखरे से कि risk न था. definitely से चाहिबो business चालू, बाकी से एते टेंशन न बनी, just like a businessman. Okay. Thereafter तार रिटर्न रे ताको कोन मिलिबो? he will get salary, remuneration or wages. Okay. Thereafter, next important feature of employment is, in case of employment, the employee will provide services to his employer with an intention to get remuneration. So this is all about business, profession and employment and its features. So हमें आज क्लास रे बेसिकली देखिले ना कोन नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस रा हमें इनिशिएशन ना जी नेथिले, इनिशिएट करथिले टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानिले सब किछि स्टार्टिंग हिची ह्यूमन एक्टिविटी रू. Human activity means the activities performed by human being to satisfy their wants. Thereafter, human activity further divided into two parts, that is economic activity and non-economic activity. Economic activity means those activities which are performed by human beings to get monetary benefit or with an intention to earn money. मनुष्य जो activity perform करे ताको हमें कहिबा economic activity. Non-economic activity means the activities performed by human being without any intention to earn money. These are the activities performed by human being to get mental satisfaction or psychological satisfaction. Thereafter, economic activity रा पूरी further division थिला, that is business,
प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रो सेमिति किछि फर्दर पार्टीशन नथिला तो आमे पुनी स्टडी करले बिजनेस कोन प्रोफेशन कोन एम्प्लॉयमेंट कोन बाकी आमे इथिरो गोटे जिंस क्लियर हे गले बिजनेस आछि छि कोठू बिजनेस आछि छि हमर इकोनॉमिक एक्टिविटी रो इकोनॉमिक एक्टिविटी आछि छि ह्यूमन एक्टिविटी रो ओके तो बिजनेस माने कोन बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन इंटेंशन टू अर्न profit then after hame padhile employment means there is a relationship between two parties employer and employee where employee work for the employer with an intention to get remuneration or salary thereafter profession means a specialized skill of knowledge which one person have to obtain to become a professional example doctor example lawyer example chartered accountants etc so this is all about the economic activity so this is a quick recap class about the first chapter of business studies and management. Thank you very much for watching the video. If anyone want the notes regarding this video lecture, then they can easily download it under the description of the video, which is absolutely free of cost. Thank you for watching the video. Thank you very much.